the participants to this once again to the Plex Connect webinar series. We are fortunate to have you all with us today. I request to moderate this program to invite Mr. Suraj Dhawan. Mr. Suraj Dhawan is a IIM Calcutta alumnus. He also specializes in international trade development and has worked relentlessly in post-pandemic times toward the bridging gap between the international business stakeholders. He is now focusing on bridging financial innovations in the international business. I invite Mr. Suraj Dhawan to take the further proceedings for the program. Thank you, Naman. Good afternoon, everyone. Good afternoon to our dear plastics community. I would like to thank our ED, PLEXCONCIL, Mr. Sma Platform, for giving us an opportunity. 2 weeks ago, we had this discussion in Mumbai where he suggested that we should think of making our member companies much bigger and stronger. And that is why all of us are here today. Between me and my colleague, Mr. Sunil Pandey from Earthwith Capital, we are now coming up with solutions which we feel will be exceedingly useful for the plastics community in becoming bigger, stronger, and better. Please join us for all the next 6 sessions, and this could be the best investment of your life in the next 4 weeks. I would like to request Mr. Alpesh Patel to give the welcome address. Mr. Patel is the chairman of PLEXCONCIL Gujarat Regional Committee and director of NAC Packaging Private Limited. Over to you, Alpesh Bhai. Thank you, Suraj sir. Thank you. Good afternoon, friends. I would like to extend warm welcome to all the participants of this webinar. It is indeed my pleasure to have you all with us for today's webinar on guidance on equity IPOs planning on BSE SME Exchange being organized by the Plastic Export Promotional Council, PLEXCONCIL, in association with the Falcon Business Energies. Friends, micro, small and medium enterprise MSME sector has emerged as a highly vibrant and dynamic sector of the Indian economy over the last 5 decades. MSME is not only play crucial role in providing large employment opportunities and competitively lower capital costs than large industries, but also help in industrializations of rural and backward area, thereby reducing regional imbalance, ensuring more equitable disturbance of the national income and wealth. MSME are more competitive to large industries as an exchange unit, and this sector contributes enormously to the social economical development of the country. As India IPO market is a booming, there are existing opportunities for India SME manufacturers and exporters to float their company on BSE SME Exchange. BSE SME platform offer an entrepreneurs and investor friendly environment which enable us to listing of the SME from the unorganized sector scattered throughout India into the regulated and organized sector. BSE SME can assist those SMEs to raise equity capital for their growth and expansion, and thus help them blossom into full-fledged companies. To talk on more on these topics, we are pleased welcome to Mr. Ajay Thakur, Head BSE SME and Startup, who will guide you on fundraising options from MSMEs and IPOs planning assessment. We are also pleased to welcome CA Gaurav Jain from Securities to this webinar. We are glad that both the speakers have joined us today and managed to address our participants on these important webinars. Before we proceed for webinars, I urge all the participants to use PLEXCONCIL mobile application, Plex Connect, digital magazine, and take active participation in various initiatives of the PLEXCONCIL, such as representing trade issue to
respectively government authority, organizing Indian Pavilion under the aegis of Ministry of Commerce and Industries at various international exhibitions, buyer-seller meets, knowledge webinars, market intelligence, trade statistics to export. Once again, I welcome all the participants to this webinar and request everyone to take maximum advantage of expert experience of the speaker. We are sure that today's webinar will be helpful to our industry's member. Thank you everyone, and stay safe and healthy. Thank you everyone. Over to moderator for further processing. Thank you, Alpesh bhai. Thank you. Yes. Sir, I see most of the people are Gujarati in this session today. And for Gujaratis, it's only the financial paper which makes all the difference. Kya bada, kya ghata. And today with Ajay Thakur ji, Gaurav Jain and Mr. Sunil Pandey from Earthwith Capital, who has helped us to do this webinar, I can only say that let us do dhande ki baat. And I would now like to request Shri Ajay Thakur, the big boss in the SME Capital Exchange with 27 years of experience with various working organizations in SHCL, VSE and BSE, and being the head of BSE SME and Startup, he is the one who can guide us through in saying how plastics industry can take benefit of the current IPO boom. Over to you, Ajay ji. Thanks, Suraj ji, Alpesh ji, Sunil ji for inviting me for this event. Today I am in Gujarat only. And Great. so I keep on connecting. I think I hardly stay for 10 days in Mumbai and around 15 days I keep on moving across the country. And let me tell you that since I started this SME exchange in 2011-12, because BSE being the first stock exchange to get recognition, approval from SEBI to launch the SME exchange, we became the first stock exchange to launch the SME platform on 13th March 2012. And in last 10 years or so, let me tell you, to create the ecosystem has been a big task. Over last 10 years, I think I have met more than 36,000 promoters across the country and conducted almost 2,000 to 2,500 seminars, webinars, etc. But in India, you know, equity culture has been very less. Financial literacy is also less. Most of the promoters are technocrats in nature. And so it becomes very difficult to make them understand the benefits of listing. And therefore, only, you know, 400 plus company got converted after meeting so many promoters. And out of that, almost 356 SMEs got listed, but they have created a value of 42,500 crores. And they have raised almost 4,000 crores from the market. So yes, a stock exchange is a place to unlock the value, create branding and visibility for yourself, and there are you know, enormous benefits that are associated with the stock exchange. If you see BSE, we are the organization who has created equity culture in the country. Formally, we are in place for last 147 years. Informally, we have been in existence for almost 200 years. And in last 147 years, let me tell you, we have created a market capitalization more than the GDP of this country. The market capitalization of all the listed companies on BSE is almost $3.2 trillion. So this is what it has happened. And let me tell you, in the time of COVID, something, you know, unprecedented has happened. Something extraordinary has happened. Till 31st March 2020, number of investors registered with the stock exchange were almost 30 million or 3 crores. Today, in 1.5 years, we have added another 60 million or 6 crore investors and touched 9 crore investors. And if this way it will go on, I think it will become the largest asset class in this country. Maybe, you know, we will see number of investors more than the farmers of this country. So this way, you know, the whole capital market is evolving, and you know,
we have seen momentum in the IPO market, both on the main board as well as on the SME board. But still, my vision is to ensure that at least 500 SMEs get listed every year. Not in 10 years, 400. 500 SMEs should get listed every year. And let me tell you, that will help this GDP of the country to reach double digit. There is no other way whereby we can, make this country one of the most powerful country in the world. And I think one instrument, or you can say the Brahmas that is available in the country for the promoter is the equity. Equity is that Brahmas which can, differentiate between micro, small company and the large corporates or the blue chip company. All the blue chip company has the equity component or listing feature in them, and that's why they become such a big organization. We have seen happening with Reliance, we have seen happening with Infosys, we have seen happening with Nilkamal Plastics. I thought that taking a name in the plastic industry will be better so that you can connect with it. In fact, on the SME platform, we have seen the listing of Mitsukem Plast India Limited, again from the plastic sector, which has evolved and migrated to the main board. So this way, we are ensuring that the SMEs should also become large corporates or blue chip company. Now, what was the reason for starting this SME platform was that we have got the stock exchange where any company could have got listed, but some wrong things have happened from both the promoter side and from the wrong people in the market, and therefore stock exchanges and SEBI have to take the actions and make the guidelines very stringent. And therefore, it became difficult for the SME promoters to get listed onto the stock exchange. And there was a representation to the Prime Minister that a stock exchange dedicated to SMEs should be started. So a committee was formed. The committee has given the recommendation to SEBI, and SEBI has formulated guidelines on 18th May 2010. And also formulated a CDR guideline and laid down the path for getting the SMEs listed onto the stock exchange. So, this whole procedure is very simple. I can say it's the simplest procedure through which an SMEs can seamlessly and smoothly can get listed onto the SME platform. The guidelines have been kept as simple as it can. Now, let me tell you what are the guidelines on the SME platform. There are 3-4 guidelines. Number one, the company or the firm, when I am talking about the firm, that is proprietorship, LLP, a partnership firm, or private limited or public limited. So any type of firm who has completed 3 years of existence with any 1 year of operating profit in last 3 preceding years with net tangible asset of 1.5 crores and paid up capital below 25 crores are eligible to get listed onto the SME platform of the stock exchange. So there are 4 eligibility criteria. If any company fulfill these eligibility criteria, they are eligible to get listed. Any firm, either proprietary or partnership or LLP or private limited or public limited, having track record of 3 years, number one. Number two, operating profit in any one of the preceding 3 years and net tangible asset of 1.5 crores with paid up capital below 25 crores are eligible to get listed onto the SME platform of the stock exchange. These are the eligibility criteria. I think most of the companies are eligible to get listed onto the SME platform. Number two, what are the other benefits? So when we were deliberating at the time of launching this SME platform, we were aware that SMEs don't have the bandwidth to do a lot of compliances which the main board companies have. And most of the promoters don't get listed because they fear of compliances. There is a fear of compliance that they are post-listing, they have to do a lot of compliances. So we have reduced the compliances substantially. What we said that the company has to come out with unaudited result with limited review on half-yearly basis, and yearly they have to come out with audited results. That's number one. Number two, they have to file half-yearly shareholding pattern. Again, it's very easy to get those shareholding patterns. You can ask the registrar to the issue and they will provide you, and it has to be submitted to the stock exchange. Third, the company has to keep a company secretary. Number four, there should be a board
comprising 1/3 of the independent director. Now, independent directors are those who don't have any blood relation or financial relation with the promoters of the company. That is one thing. And fifth, the company has to call for an AGM. That is on yearly basis, or extraordinary general meeting will be called when if some extraordinary thing is going to happen in the company. And sixth, they have to inform the stock exchange related any material development in the company. So any material development that has a bearing on the price of the company, positively or negatively, has to inform to the stock exchange within 24 hours. So very simple post-listing compliances, very simple. Today other compliances are much harder to comply than these compliances. So we have kept it as simple as it can, so that the SMEs don't have to face any difficulty. Once they get matured, once they understand the nitty-gritty of the capital market, they can think of you're doing more compliances. But let me tell you, till listing, promoters have got all these fears. Okay, I have met 36,000 promoters. Those who got listed, till listing, they have been telling me, sir, you have to remain with us, sir. This is your company. You have to take care of us. But let me tell you, post-listing, not a single promoter has called me. Okay, not a single promoter has called me. They have become 1,000 crore company, 500 crore company, and they take the credit of all success. Okay, they keep on sending you the WhatsApp message to the whole group, posting it on LinkedIn, Facebook, and taking credit of all the success. They don't give me any credit. But till the time of listing, they keep on, checking my blood pressure and keep on putting me a lot of tensions, etc. So all these fears are there. The fear of compliances also disappeared post-listing, because 30% of the companies which are listed onto the stock exchange have already migrated to the main board. And let me tell you, the migration process is again very simple. Once you get listed on the SME platform, after 2 years, if your post-issue paid-up capital has crossed 10 crores and the market capitalization has crossed 25 crores, then with 2/3 non-promoters approval, you can seamlessly migrate onto the main board. And it's a very cost-effective way of migrating to the main board of the stock exchange and telling the world that you have become a big company. Very simple, very cost-effective. So we are so much cost effective. Let me tell you, as listing on the SME platform is so cost effective that even Asian Development Bank, ISCO, and World Federation of Stock Exchanges have mentioned in their report that the listing on BSE SME platform is the most cost effective way of getting the company listed onto the stock exchange. So much cost effective it is. Now the main question arises that why the company should go for listing, why the SMEs go for listing. So number one, see, there are two ways of raising funds. One, bring your own funds. Now there is a limitation. Or you go for bank funds. Then again, taking a lot of bank funding is also very bad for the company. So I have met 36,000 companies. Most of the balance sheets are unhealthy, let me tell you. And one of the major reasons is that all the companies are over leveraged. So what happens that you can come onto the stocks and dilute your 25% equity, raise equity fund. You don't have any tension of servicing the equity funds. Just keep on performing, and those people who have invested in your equity, they will be rewarded through capital appreciation. So that is the one benefit. Second benefit, as I have told you, once the equity funding comes, cash outflow reduces, and therefore your balance sheet looks real balance sheet. It doesn't look like imbalance. It looks like balance sheet, and it looks like healthy balance sheet. That is the second benefit. Third benefit, the perception of the people changes. The perception of the stakeholder about your company changes, because now they feel that yes, the company has become transparent. There are delegation of powers to the various people in the company, and company is meeting with all the compliances, etc. And therefore they start seeing the company positively. And therefore, in many cases, we have seen post listing, the interest rate has also reduced by 50 to 100 basis points. So that is the third benefit. Fourth benefit is the visibility. Okay, the visibility of the company increases. I have seen the companies when the price was 50 rupees, not much, many people were knowing the products were good. But when it reaches to 500, suddenly people started buying their products. I remember, and I have seen, when Havel was
traded at 150, 200 rupees, not many people used to know about Havel products. But when it reaches to 800 rupees, suddenly everybody start knowing about Havel, and suddenly Havel's branding has gone up, its visibility has gone up. Same way we have seen with Asian Paints, United Breweries, and many other companies. So what has happened post-listing, once the prices has gone up, transparency has gone up, profitability has gone up, the visibility of the company increases, the brand building has started happening. So that is the fourth benefit. Fifth benefit, you can retain best of your employees by giving them ESOPs. The way Infosys, Wipro, that asset-light model companies have done, because they don't have the support of banks, because they were very asset-light model companies. They have no collateral to give. So how to retain best of the employees in the initial years was by giving them ESOPs. And ESOPs have got value only when the company gets listed. They unlock the value, and that's how the employees gets motivated. Now, sixth benefit is this, that I always say that there are only two people who issue currency. One, RBI governor. Okay, if he gives you, if you take 2,000 rupees from me, it's only because RBI governor has signed on it, and he has promised to pay the bearer 2,000 rupees. And what is rupee? Rupee is the equity of government of India. That's why when the economy does well, rupee appreciates. When the economy do bad, rupee depreciates. It's the equity of. But with time and because of inflation, rupee depreciates. There is another person who issue currency, is the promoter of the company. Okay, he comes out with his shares, he prints his papers and issue to the public at large, tell them to subscribe, and again these shares are being traded onto the stocks. So the promoters are also issuing currency. But let me tell you, these promoters who issue share certificates are much more stronger than Reserve Bank of India governor, because they never promise to pay the bearer anything. So what happens that if you have issued shares at 50 rupees, if the price appreciates because maximum shares you are holding, your value increases. And when the price depreciates because of some or other reason at some or other point of time, you don't have the responsibility to make the loss good to any investors. That's the one. Third, always equity is being treated as a natural hedge to inflation. So this is the another benefit that a promoter can enjoy post-listing. And seventh benefit is that this equity becomes collateral in the hands of the promoters. With the time, if you don't have another collateral, or you want to place those collaterals, that is physical collaterals, to anyone for taking loan, you can use this equity as a collateral, pledge it, and get loan on it. So these are the multiple benefits that a promoter can enjoy by getting his company listed onto the stock exchange. I don't think that human being has invented any other instrument which gives so much benefits to the promoters what equity gives. And still I have not been able to understand till now why the promoters don't rush to get their companies listed. So I keep on speaking on all webinars. Today I am at Surat, going on various meetings, and in between of the meetings I am addressing you all. So my job in last 10 years to keep on meeting the promoters, keep on talking them, keep on telling them benefits, and tell them that, boss, please get your company listed this, and use equity as your best instrument to raise funds. And that's the most important thing. And now there are presidents of the SME platform, presidents of the main board, that how the companies become large corporates. So my request to all the promoters that please use this platform. And let me tell you that before launching this SME platform, BSE has, or any other stock exchange, have never gone to the promoters to explain them the benefits of listing or try to convince them to get the company listed. When I started this SME platform, then we thought that sitting like a babu in the company is not going to do anything good for the country. We need to nurture the SMEs of this country. We need to bring them onto the stocks, make them big and large corporates, so that millions of employment can get created and this country go to the progress path. So my request to all promoters that please come onto the SME platform, get your company listed onto the stock exchange, and enjoy the benefit of listing. As far as
I am concerned, let me tell you that, or let me assure you that we will give you red carpet welcome when you get your company listed onto the stock exchange. We will help you in all, help you in every possible way to under the rules regulations of the stock exchange, the laws of land, so that you progress and become a large corporate. So with these words, thanks a lot. If there is any query you can address to me, I am there to take those questions. Thank you, Ajay ji. I'm sure all our plastic companies are looking and joining the next generation. I just request Mr. Mahesh Patel to stop sharing the screen. By mistake, your screen is being shared with everyone. Please stop sharing the screen. Sir, you'll have to stop video button and then it will be done. And the red button at the bottom, stop video. One second. Mahesh ji, are you there? अजय जी थैंक यू सर, और आपने टाइम निकाला है हमारे मेंबर्स के लिए सर, रियली थैंक यू सर। थैंक यू अजय। सर यहाँ पर जो भी पार्टिसिपेंट है ना, वो बहुत क्वालिटी, एक श्याम भाई है जो मतलब काफी एग्रेसिव है, काफी तो ऑलरेडी है यहाँ पर, अंकित करके है, वो शुभम करके, वो ऑलरेडी ये प्लेटफॉर्म के ऊपर रजिस्टर्ड है, और काफी मेरे ख्याल से ये जो प्लेटफॉर्म आज जो लोग ज्वाइनिंग कर रहे हैं, जो मैं देख रहा हूँ मेंबर्स में, शायद 101% गारंटी का 2 से 3 मेंबर तो मिनिमम ज्वाइन तो करेंगे ही आपका प्लेटफॉर्म सर। थैंक यू। मैं भी हूँ बैठा हुआ यहाँ पे, मर्चेंट बैंकर भी हैं, सुनील जी भी हैं, सब लोग हैं, और हम सब लोग आपके लिए, आप लोगों के लिए ही हैं। तो हमारा ये मानना है, और मैंने हर हमेशा ये बोलते रहता हूँ कि मेरे लिए तो प्रोमोटर्स भगवान की तरह है, क्योंकि वही रोजगार देते हैं, वही रोजी रोटी और लाखों लोगों को, तो उनके ग्रोथ में, उनके आगे बढ़ने में ही इस देश का फायदा है और हम सभी लोगों का फायदा है। सर आपका ये जो पॉजिटिवनेस है ना, वही वहां से ही एनर्जी शुरू हो जाती है। आपका जो एग्रेसिवनेस और पॉजिटिवनेस जो है आपका, मतलब पैसे ऐसे जो आपने बताया वो एकदम सही है कि सब लोगों को ऐसा ही लगता है कि यार इतना बड़ा, खुद मेरी कंपनी अभी रजिस्टर्ड नहीं है तो स्टिल आई फील का मतलब ये कितने वो करने पड़ेंगे, मगर टू बी वेरी ऑनेस्ट, रियली इम्प्रेस्ड एंड ग्रेट वेलकम फ्रॉम योर साइड सर, रियली थैंक यू सर। Alpesh bhai, what I can say that Thakur ji will meet you tomorrow at your office and start your process. Please sir, please. And please. friends, Thank you. I think Ajay ji has given a very nice explanation about the opportunity. But to really get into the action mode, you require a merchant banker to make it happen. And we again have a very famous and popular merchant banker, Gaurav Janji from Securities. I can only say उन्होंने बहुत सारे लोगों को करोड़पति से ऊपर बनाया। So Gaurav is one of the largest CB registered merchant bankers in SME for over 18 years. He has raised 600 crores, but whose current market cap is over 10,000 crores. इससे ज़्यादा मैं गौरव जी की इंट्रोडक्शन नहीं दे सकता। Gaurav ji, over to you and tell the plastics community how they can make a difference. Over to you, Gaurav. Suraj ji, can I take your leave? I have to enter into some meeting. ठीक है sir, with your permission. On behalf of PLEXCONCIL, I thank Ajay ji. But sir, this is not the last time we are meeting you. Very soon, PLEXCONCIL will call you for another discussion, maybe at the PLEXCONCIL office. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you for joining, Ajay, sir. Thank you. Thank you. So, Gaurav ji, over to you. Now, I think Ajay ji has created enough excitement. अब हमारे जितने भी CEOs and owners बैठे हैं, उनको बताइए कि मर्चेंट बैंकर क्या जादू खिलाता। Over to you, sir. डन सर, नमस्कार। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस हियर। आई फील अजय जी ने काफी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन हमको बताई है। मैं आप लोगों से बात करूंगा बहुत इंटरेक्टिव तरीके से, जिसके अंदर किस तरह से एसएमई सेगमेंट के अंदर अलग अलग कंपनियों ने
लिस्ट करके दे हैव रीच टू डिफरेंट माइलस्टोन्स, काफी सारे मिथ्स होती है, सो हम काफी इसको सिंपलिस्टिक वे में रखेंगे। एक एकेडमिक पार्ट जो है वो अजय जी ने ऑलरेडी कवर करा है। जस्ट गिव मी 1 सेकंड, आई विल स्टार्ट माय प्रेजेंटेशन। और मैं ये कहूंगा, ये जैसे गौरव जी कह रहे इंटरैक्टिव है, अगर किसी ने कोई सवाल पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। आपका एक सवाल बाकी लोगों को भी गाइडेंस दे सकता है, सो प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट गौरव जी व्हेनेवर यू फील लाइक। ओके गौरव? Yes sir, just give me 1 second, I'll just open the presentation. Hello. Hello. गौरव, आपको कोई चैलेंज तो नहीं आ रहा ना? No, I'm just allow me 1 sec. I'm just trying to. Yeah, we can see your now screen. This would be a different presentation. हाँ जी, अभी now you can share the screen whatever you want. Yeah, just 1 sec. Okay, are you able to see my screen? SME listing handbook. Yeah. So let's look at the new India. So I feel the in case we try to look at the Indian landscape, NSE, like they have become the second largest stock exchange globally. In terms of startup listing, we are third largest ecosystem globally. SME exchange, we are one of the fastest growing SME exchange globally. So India is changing. What is more important is we need to change from this theory of profit is king. अगर हम बिजनेस कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, भाई सबसे ज्यादा हम देख रहे हैं कि भैया कमाई कितनी कर रहे हैं, ये एक डिफरेंट हो गया है। आज के दिन के अंदर वेल्थ क्रिएशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग थ्रू इक्विटी वैल्यूएशंस। सो आज कोई भी आपने कई कंपनीज को भी लिस्ट होते हुए देखा है, जैसे जोमेटो, पेटीएम, कई सारी कंपनीज लिस्ट हुई है। सो प्रॉफिट देखिए हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है, बट न्यू एज सेक्टर्स इमर्ज हो रहे हैं जहां पे अगर कंपनीज में आगे दम है तो भी ना कहते लोग उसको इक्विटी वैल्यूएशन देने को तैयार हो रहे हैं। आज अगर हम उनके साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, देन लाइक प्रोबेबली वी विल बी मार्चिंग अहेड विद अदर पीपल। ये सबसे बड़ी बात हमको समझने की है। कुछ थोड़ा सा हम डेटा दे रहे हैं। ओवरऑल 580 कंपनीज ऑलरेडी लिस्ट हो चुकी है, दोनों ही स्टॉक एक्सचेंज में। हमने 64 कंपनीज के आसपास हमने करवाई है। 64,000 करोड़ का मार्केट कैप है। हमारा जो मार्केट कैप है 10,000 करोड़ का मार्केट कैप है, हमारी कंपनीज लिस्ट कराई हुई। हिस्ट्री ऑफ एसएमई एक्सचेंज अजय जी ने ऑलरेडी बता दिया है किस तरह से एसएमई एक्सचेंज हुआ। आज अगर आप ये देखते हैं, जो मेन बोर्ड कंपनीज है, काफी सारे आईपीओ अभी मेन बोर्ड के अंदर भी आ रहे हैं, बट एसएमई एक्सचेंज भी कंटिन्यूस बेसिस पे 2021 के अंदर ऑलमोस्ट 43, आई फील ये डेटा ऑलमोस्ट 10 डेज या 15 डेज पुराना होगा, ऑलमोस्ट 50 कंपनीज ऑलरेडी 2021 में लिस्ट हो चुकी है। वहां पे 43 कंपनीज एसएमई के अंदर लिस्ट हुई है। तो 40 to 50% जो लिस्टिंग्स हो रही है इंडिया के अंदर, वो एसएमई एक्सचेंज के अंदर हो रही है अभी। हर तरह का सेक्टर, जो आप सेक्टर सोच सकते हैं, वो सेक्टर्स ऑलरेडी एसएमई एक्सचेंज में लिस्टेड है, चाहे वो टेक्सटाइल हो, चाहे वो फाइनेंस के अंदर हो, फूड प्रोसेसिंग, कंसल्टिंग, रियल एस्टेट, एनीथिंग, इट इज ऑलरेडी लिस्टेड। जो सबसे बड़ा जो हमको रुझान देख रहे हैं हम, वो महाराष्ट्र से, गुजरात से, ये दो बहुत बड़े स्टेट्स हैं। बट ओवरऑल इक्विटी मार्केट के अंदर भी जो एक मेजर चंक आता है, जो मेन हम रेगुलर जो हम ट्रेडिंग करते हैं, वो भी इन दो स्टेट से आता है। तो इसके लिए यहाँ पे इक्विटी कल थोड़ा ज्यादा है। हमको ये देखना है अगर हमारी कंपनी ग्रोइंग है, देन लाइक प्रोबेबली वी कैन इवेल्युएट। आज आगे मैं बात करूंगा किस आपको खुद को ये पता चलेगा कि भाई हम ये हमारी कंपनी लिस्ट करा सकते हैं या नहीं करा सकते हैं। हर तरह की कंपनी हम लिस्ट होती है। देखिए 5 करोड़ से टर्नओवर से लेके 500 करोड़ रुपए का टर्नओवर, वी हैव सीन कंपनीज फ्रॉम 25 lakhs प्रॉफिट्स टू 25 करोड़ ऑफ प्रॉफिट्स। सो इन टर्म्स ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज कंसर्न, हर तरह की कंपनी लिस्ट हो सकती है। एज मर्चेंट बैंकर हम काफी चूजी हैं, हम देखते हैं एक्चुअल में कंपनी को लिस्ट कराने का फायदा होगा या नहीं होगा, आगे मल्टीफोल्ड ग्रोथ होगी या नहीं होगी। अगर वो है, देन लाइक प्रोबेबली हम चूज करते हैं कंपनी को लिस्ट करा के उसको आगे किस तरह से हम बढ़ा सकते हैं, अलग अलग एवेन्यूज उनके लिए ओपन कर सकते हैं। बट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से एवरी कंपनी इज एलिजिबल। अगर आप थोड़े बहुत भी अच्छी तरह काम कर रहे हैं, जो एकेडमिक डेफिनेशन है वो बहुत सिंप्लीफाइड है। LLP ना થાય છે આમાં એમ જ છે તેમાં
सर कोई अनम्यूट करना म्यूट करना पड़ेगा सर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करूँ। नेहाल भाई प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। ओके, बेनिफिट्स ऑफ लिस्टिंग मैंने काफी बात करी है, अजय जी ने काफी बताया, मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट इक्विटी वैल्यूएशन अनलॉक होना, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। इसके बाद हमारी यानी कहते हैं जो बैंकिंग फैसिलिटीज है वो इंप्रूव हो जाती है। हमने काफी कंपनीज में देखी है कि क्रेडिट रेटिंग आपकी इंप्रूव होती है, उससे 25 पैसे से 50 बेसिस पॉइंट आपका इंटरेस्ट रेट में कमी आते हुए हमने देखी है। ब्रांडिंग आपकी क्रिएट होती है, नए दूसरे फंड रेजिंग ऑप्शंस आपके क्रिएट होते हैं, जैसे QIPs होते हैं, राइट इश्यूज होते हैं, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट्स होते हैं, इस तरह से होते हैं। एक आज हम देख रहे हैं जो नए नए बिजनेसेस हैं, CEOs को लेके आ रहे हैं। काफी हो सकता है यहाँ पे जो आज एंटरप्रेन्योर्स अवेलेबल रहे वो खुद बिजनेस अपने चला रहे हैं। प्रोफेशनल अगर आपको CEOs को लेके आना है, आप उनको ESOPs आप दे सकते हैं। तो लिस्टिंग के साथ कहीं कोई अगर आदमी बोलता है कि मेरे को 1 करोड़ रुपए का पैकेज चाहिए, हम अभी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, आपने उनको 25 लाख का पैकेज दिया, 30 लाख का पैकेज दिया फॉर एग्जाम्पल ईयरली, और बाकी आपने उनको थोड़े से स्टॉक्स दे दिए कि आप परफॉर्म करो, हमारी ओवरऑल स्टॉक वैल्यूएशन बढ़ेगी, आपको भी बेनिफिट होगा। इस तरह से भी कंपनीज कर रही है। दो चार मैं आपको एग्जांपल देने की कोशिश करूंगा। शेयर इंडिया सिक्योरिटीज करके एक कंपनी को हमने लिस्ट करवाया 2017 के अंदर, 100 करोड़ रुपए के मार्केट कैप के ऊपर 25 करोड़ रुपए का उनका IPO आया। जब 200 करोड़ रुपए का उनका मार्केट वैल्यूएशन हुआ, डबल हुआ, उन्होंने एक दूसरी कंपनी 50 करोड़ रुपए के अंदर खरीदी, पूरे के पूरे अपने शेयर्स उनको दिए, कोई पेमेंट नहीं करा, ऑल स्वैप डील हुआ, शेयर स्वैप डील हुआ और वो कंपनी उसमें मर्ज हो गई। हमने उनके प्रॉफिट्स होते हुए देखे, 8 करोड़ से लेके 80 करोड़ के प्रॉफिट्स हमने मूव होते हुए देखे 4 से 5 साल के अंदर। 100 करोड़ रुपए का वैल्यूएशन हो गया 2700 करोड़ रुपए का। सो दिस इज पावर ऑफ लिस्टिंग कि आपका प्रॉफिट तो 8 से 80 हुआ, बट यहाँ पे 100 करोड़ से 2700 करोड़ रुपए की आपकी वैल्यूएशन हो गई। दिस इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। बट इंपॉर्टेंट ये है जो ग्रोइंग कंपनीज है उन्होंने भी एक दूसरी कंपनीज को अपने में मर्ज करा बिना पैसे दिए। EK एनर्जी अभी एक बहुत एक इंटेलिजेंट एग्जांपल रहेगा। ये कंपनी कार्बन क्रेडिट्स में है। इस कंपनी को हमने अप्रैल में लिस्ट करवाया। कंपनी की उस टाइम हमारा 100 करोड़ रुपए का मार्केट कैप था। आज कंपनी का मार्केट कैप ऑलमोस्ट 3 से 4 हजार करोड़ रुपए का हो चुका है। क्यों? कंपनी के प्रॉफिट्स मल्टीफोल्ड हो रहे हैं। सो कंपनी के प्रॉफिट्स हमने बढ़ते हुए देखे 10 से 20 करोड़ से उनके प्रॉफिट्स अभी 2 क्वार्टर के अंदर उनके प्रॉफिट्स हो गए हैं 100 करोड़ रुपए के। ऐसी कभी एक बार कंपनीज आती है कि भी आपने 1-2 क्वार्टर के अंदर ही आपने इतना बड़ा जंप देख लिया, पर अगर जंप अगर देख रहे हैं तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है। तो जो इन एग्जाम्पल से मैं समझाना चाह रहा हूँ, अगर आपके प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, यहाँ पे 8 to 10 टाइम्स आपकी वैल्यूएशन बढ़ेगी। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी है, यहाँ पे सपोज अगर है ना हमारा 10 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है और हम 5 करोड़ रुपए ही बुक्स में दिखाते हैं, 5 करोड़ रुपए बचाने के लिए आपने 25% टैक्स बचाया, अप्रोक्सीमेटली 1-1.25 करोड़ रुपए आपने टैक्स बचा लिया। बट अगर 8 to 10 टाइम्स ऑफ योर प्रॉफिट्स आपकी कंपनी की वैल्यूएशन होती है, तो हमने 100 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन हमारी 50 करोड़ रुपए की कर ली सिर्फ 1-1.25 करोड़ रुपए बचाने के लिए। ये चीज समझने की है। जो टैक्स सेविंग माइंडसेट है हमारा, उससे वेल्थ क्रिएशन माइंडसेट के ऊपर हमको जाना पड़ेगा। जो प्रॉफिट्स हमारे एक्चुअल हैं उसको आपको दिखाने पड़ेंगे। कई सारे SME के अंदर लोग बोलते हैं कि भी इन्वेस्टर्स आते हैं नहीं आते हैं। ये कंपनीज को हमने लिस्ट करवाया 2016 के अंदर 30 करोड़ के मार्केट कैप के ऊपर। राकेश झुंझुनवाला जैसे एक बड़े मार्केट इन्वेस्टर्स कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं जब कंपनी बड़ी हो रही है। सो हर जो SME सेगमेंट के अंदर भी हमें कहते हैं मार्केट इन्वेस्टर्स को हम देख रहे हैं। कंप्लायंसेस बहुत ज्यादा नहीं है। आपको सितंबर एंडिंग रिजल्ट्स आपको बनाने पड़ते हैं, वो भी पूरे ऑडिट नहीं करवाने पड़ते आपको। जो हर क्वार्टर में आपको बोर्ड मीटिंग करनी पड़ती है। कंपनीज एक्ट कहता है प्राइवेट कंपनी के लिए भी आपको हर क्वार्टर में करनी है, पर हम बैकडेटेड एंट्री कर लेते हैं। इस बार आपको हर क्वार्टर में करनी है। तो आप सितंबर एंडिंग रिजल्ट्स आप दिखाइए, आप इन्हें कहते हैं हर क्वार्टर में बोर्ड मीटिंग दिखाइए, एक कंपनी सेक्रेटरी को आप एम्प्लॉय करिए और थोड़े बहुत कंप्लायंसेस को इन्हें कहते हैं आपको ध्यान रखने की जरूरत है। एज अ प्राइवेट कंपनी हो सकता है कि कंपनीज एक्ट हमको कहता हो कुछ फॉलो करने के लिए और हम इतना रिगरसली फॉलो नहीं करते हैं उस चीज को। सो यू नीड टू फॉलो दैट्स द होल आइडिया। कई सारे मिथ्स होते हैं कि अभी राइट टाइम है या नहीं है। मेरी करंट वैल्यूएशन अचानक से लोगों को लगता है कि भी जब वो चालू करना चाह रहे हैं IPO का काम, कि आगे आने वाले टाइम के अंदर ही तो मेरी वैल्यूएशन बढ़ने वाली थी, अभी क्यों करूं, 1 साल 2 साल बाद करूंगा। कई इस तरह की बात होती है। अभी मेरी बुक्स प्रॉपर है या नहीं है। IPO प्राइवेट इक्विटी करें, SME IPO करें, मेन बोर्ड IPO करें, रेगुलेटरी इंटरवेंशन कितना हो जाएगा, कॉम्पिटेंट मैन पावर हमारे पास अवेलेबल है या नहीं है, इंटरफेरेंस कितना हो जाता है पब्लिक शेयर होल्डर का, टेक ओवर तो नहीं हो जाएगी हमारी कंपनी, कितनी कॉन्फिडेंशियली ब्रीच होएगी। इस तरह के माइंड थॉट्स हमने काफी देखे हैं। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर बड़ी बड़ी कंपनी जैसे सैमसंग है, आईफोन है, ये भी अगर लिस्टेड है, कॉन्फिडेंशियलिटी सारी यानी कहते हैं हर कोई सब चीज नहीं बताता है। आपको इंपॉर्टेंट चीजें बतानी है। अगर कभी कोई
कोविड आया, आपका लॉकडाउन हो गया, आपकी फैक्ट्री लॉकडाउन हो गई, आप उसको इन्फॉर्म करिए। कभी कोई एक बहुत बड़ा ऑर्डर आपको इन्हें कहते हैं मिल रहा है, जिससे इन्हें कहते हैं ओवरऑल फाइनेंशियल्स कंपनी के चेंज हो सकते हैं, उसको अपने को बताना होता है। आज यूजुअली 25% का आईपीओ हम लेके आते हैं। तो अगर वैसे हमने अकेडमिकली देखें, एक आदमी कभी भी कोई जो थर्ड पार्टी आपका शेयर कभी भी एक्यूमुलेट नहीं कर पाता, अगर कभी कर भी ले अकेडमिकली तो भी 75% आपके पास अवेलेबल है। कभी भी कोई जो टेक ओवर थ्रेड आपके पास नहीं होती। पब्लिक शेयर होल्डर का जो इंटरफेरेंस होता है, यूजुअली देखिए आज की जो पब्लिक है थोड़ी सी इन्फॉर्म्ड है पहले के मुकाबले के अंदर। सो कंपनी सिर्फ ये चाहती है कि भी अगर आप परफॉर्म करें, अगर परफॉर्म नहीं कर रही है, जब आपके रिजल्ट्स आते हैं, कई कंपनीज कॉन्फ्रेंस कॉल रखती है, उस टाइम जो शेयर होल्डर है वो उनसे क्वेश्चंस पूछते हैं कि भाई ऐसे हो रहा है तो क्या चीज होगी, तो आप उनसे कम्युनिकेट करिए। देन लाइक प्रेवली थिंग्स आर मच मोर सिंपलर। रेगुलेटरी इंटरवेंशन 8 से 10 साल के अंदर जो हमने एसएमई आईपीओ का हमने पूरा प्लेटफॉर्म देखा है, उसके अंदर कंपनीज को बहुत ज्यादा कोई लेटर्स आ गए हों एक्सचेंज से, सेबी से, ऐसा अभी तक हमने देखा नहीं है। यूजुअली क्या होता है, जनरल धारणा होती है कंप्लाइंस बहुत बढ़ जाएगी, अभी करें एक छोटा आईपीओ क्यों करें ऑलरेडी। तो यू हैव टू लुक एट फैक्ट्स, किस तरह से कंपनीज ने लिस्ट होके करोड़ों रुपए की वैल्यूएशंस क्रिएट करी है। दिस इज व्हाट वी नीड टू लुक इनटू। अगर आपकी कंपनी ऐसी है कि भाई ग्रो कर रही है, सेक्टर आपका इंटरेस्टिंग है, ग्रो कर रही है, डेट आपके कंफर्टेबल हैं और आगे भी आपकी मल्टीफोल्ड ग्रोथ हो सकती है, तो आज के दिन के अंदर भी शेयर होल्डर्स जो इन्वेस्टर्स हैं वो पैसा लगाने को तैयार होते हैं ग्रोइंग कंपनीज के अंदर। प्रोसेस क्या होता है, मर्चेंट बैंकर अपॉइंट होने के बाद वो पूरी कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग करता है, आपकी कैपिटल देखता है, कोई ग्रुप कंपनीज होती है वो चीज देखता है। हम दूसरे इंटरमीडिएट्स को अपॉइंट करते हैं, जैसे लीगल एडवाइजर्स हैं, प्रिंटर्स हैं, देन लाइक प्रीवियस रजिस्ट्रार जो आपके शेयर फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट्स हैं उसको डीमेट करता है। देन इसको पूरे प्रोसेस को ड्यू डिलिजेंस करते हुए हम एक प्रोस्पेक्टस क्रिएट करते हैं, जो एप्लीकेशन होती है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को फाइल करने के लिए। 2 से 2.5 महीने के अंदर ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है ड्यू डिलिजेंस का। हम एप्लीकेशन एक्सचेंज को देते हैं, इसके बाद एक्सचेंज 15 से 20 दिन में अप्रूवल दे देता है। देन 1 महीने में हम आईपीओ ओपन करते हैं, तो ऑलमोस्ट 4 से 5 महीने के अंदर ये पूरे की पूरी एक्टिविटी कंप्लीट हो जाती है। ड्यू डिलिजेंस में हम लास्ट 3 साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखते हैं, उनकी ग्रुपिंग देखते हैं, सही हो रखी नहीं हो रखी। कई बार हम देखते हैं कि जो ग्रेचुइटी प्रोविजनिंग्स है वो नहीं है, तो ये कई बार डेप्रिसिएशन प्रॉपर्ली फॉलो नहीं करा हुआ होता है। इस तरह की कॉमन चीजें निकलती है। जो आरओसी के रिकॉर्ड्स आपके प्रॉपर हैं नहीं है तो हम वो पूरे बनवा देते हैं। इसके बाद कोई लिटिगेशन हो कंपनी के ऊपर, कंपनी ने किसी के ऊपर केस कर रखा है, और लाइक प्रेवली एनी केसेस, लीगल केसेस बाय द प्रमोटर और ऑन द प्रमोटर, सो ये सब डिस्क्लोज करते हैं हम। वी टॉक अबाउट कि आईपीओ क्यों लेके आया जा रहा है, क्या वो वर्किंग कैपिटल के लिए है, क्या वो लोन रीपेमेंट के लिए है, क्या वो कोई कैपेक्स के लिए है। सो वी टॉक अबाउट दैट। सो इस तरह से हम एक प्रोस्पेक्टस बिल्टअप करते हैं। एक बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है कि भी आज कॉस्टिंग क्या आती है इस चीज के अंदर। सो मैं ये आइडिया देना चाहता हूं कि अप्रोक्सीमेटली आईपीओ आने के पहले, चाहे आपका आईपीओ 5 करोड़ का हो चाहे 20 करोड़ रुपए का हो, अराउंड 15 से 17 लाख रुपए खर्च होते हैं आपके। 5 लाख रुपए हम लेते हैं जब हम काम चालू करते हैं, 5 लाख रुपए लेते हैं जब हम पूरा ड्यू डिलिजेंस कर लेते हैं और एप्लीकेशन फाइल कर रहे होते हैं। इस बीच में 5-1 लाख रुपए दूसरे इंटरमीडिएट्स को दिलवाए जाते हैं। तो 15-17 लाख रुपए खर्च होते हैं। इसके बाद जो बाकी जो बैलेंस फीस होती है, जो कंपनीज अब आगे बढ़ना चाहती है उनसे हम 1-to-1 बात करेंगे ओवरऑल फीस क्या है। बट आपकी जेब से पहले 15-17 लाख रुपए जाते हैं, एंड देन रिमेनिंग सारा काम कंप्लीट हो चुका, पैसा रेज हो चुका, एंड देन रिमेनिंग फीस इज टेकन फ्रॉम देयर। सो वी कैन टॉक ऑन 1-to-1 बेसिस, जो बिल्कुल सीरियस है उसके ऊपर हम पूरा 1-to-1 बात कर सकते हैं। बट सबके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं 3 से 4 महीने में, अगर आपको लगता है स्लैब वाइज बेसिस के अंदर आप 15-17 लाख रुपए खर्च करने को तैयार हैं, देन लाइक प्रोबेबली दिस इज द ओवरऑल थिंग दैट यू शुड नो। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, सबसे कॉमन क्या चीज है, चाहे टेस्ला हो, चाहे सैमसंग हो, चाहे टीसीएस हो, चाहे रिलायंस हो, चाहे एक हमने इंदौर की कंपनी डीपी ज्वेलर्स हमने लिस्ट करवाया, एक हमने एनकिंग इंटरनेशनल, छोटी छोटी कंपनीज को लिस्ट करवाया, क्या कॉमन है? सिर्फ एक चीज कॉमन है, लिस्टेड है। किसी ने 10 लाख करोड़ का मार्केट वैल्यूएशन क्रिएट करा, किसी ने 1000 करोड़ का, किसी ने 200 करोड़ का, बट ये ग्लोबली प्रूवन फॉर्मूला है। अगर हमको लगता है कि हमको भी मल्टी करोड़, जैसे पहले पुराने जमाने के अंदर करोड़पति कोई होता था तो बहुत बड़ी बात होती थी, आज ही चेंजिंग इंडिया, वी पीपल आर टॉकिंग अबाउट 1000 करोड़, 5000 करोड़, 10,000 करोड़। ये प्रॉफिट्स में पॉसिबिलिटी नहीं है, ये सिर्फ इक्विटी वैल्यूएशन में पॉसिबल है। सो इन केस इफ यू वांट टू बी इन द सेम अरीना, देन लिस्टिंग वुड बी मस्ट। आई फील आई विल स्किप दिस पार्ट। ओके, एक्टिविटीज एज मर्चेंट बैंकर मैंने ऑलरेडी बता दिया। ड्यू डिलिजेंस हम करते हैं, दूसरे इंटरमीडिएट्स को हम अपॉइंट करते हैं, जो ऑफर डॉक्यूमेंट होता है, जो प्रोस्पेक्टस होता है, जो एप्लीकेशन होती है वो हम फाइल करते हैं, एंड सारा सब चीज रेगुलेटरी मैटर को आपको सिर्फ एक सिंगल पॉइंट कॉन्टैक्ट मर्चेंट बैंकर का होता है, ही टेक्स केयर ऑफ द एंटायर थिंग। वेरी क्विकली मैं हेम सिक्योरिटीज के बारे में बता देता हूँ। ऑलमोस्ट लाइक 4 डेकेड से हम ये काम कर रहे हैं। सो वी आर मर्चेंट बैंकर्स, वी आर स्टॉक ब्रोकर्स, वी डू स्टार्टअप्स, वी डू प्राइवेट इक्विटी, वी डू बिजनेस वैल्यूएशंस।
just to let you know in terms of him Securities. We have been every year we have been awarded as best performing merchant banker by both BSE and NSE consistently for last multiple years. Yeah, I feel so in case like probably you can scan this barcode in case if there are people who want to get their companies evaluated. So like you can fill the form in case if there is any issue. I'll even like probably Sunil ji is there, or so we can be contacted. So then like probably we can take it forward just to evaluate whether your company should go ahead or not. So I feel this is what like probably I wanted to speak. Then I'll be very happy to answer a few questions that our audience today have. थैंक यू गौरव, आपने बहुत अच्छी तरीके से सरलता से समझाया है कि अगर अपनी आपने ब्रांड इक्विटी को एनकैश करना है